So just as an example, this is what I would say is also historic urban landscapes and safeguarding historic cities. The reason why they are to be given legal coverage is this, that whatever is contained in these three policies mostly runs against, is counter to major. With conservation is first of all knowing what you have, and I think actually sometimes it's not the people here don't how, or let's say there are experts that realize what heritage there is. But I think that sometimes the Kashmiris underestimate the quality of the heritage that you have, and it's really, really very special. And so I think a first step is making sure that people appreciate what you have, educate young people, create a type of ownership. And if there's a type of ownership and pride in everything, then also, of course, through professional kind of initiatives, you can do safeguarding activities of protecting, repairing or reconstructing, or normally in conservation you don't do reconstruction, but all types of conservation approaches. One of the key points that we concluded in the seminar is that you, of course, need to make changes to legislation at times. But a complete deregulation would be disastrous, I think, in the case of Srinagar. That's what everybody concluded as well, I think. One of the things that stood out to me also is somebody who spoke about centralized regulations or deregulation that's being applied to Kashmir or parts of Kashmir. And I strongly believe that we should not have one rule for all or one system for all. And a lot of the approaches may work in some other cities or so in India. But Srinagar is a very particular city in a very particular natural context with a very, very distinctive heritage and architecture, with earthquake issues and with flooding issues and air pollution challenges recently in climate change. And it needs a particular approach, space-specific approach. And so if a centralized government is actually going to dictate or instruct such regulations or abandonment of regulations, then I think it's anarchy really, and it would not be for the long-term benefit of Kashmir and its population. एक सेमिनार यहाँ पर हुआ ऑर्गेनाइज श्रीनगर में. इसको इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स और ग्रुप ऑफ कंसर्न्ड सिटीजन्स जो हम लोग हैं उन्होंने ऑर्गेनाइज किया. क्योंकि ये जो नए बायलॉज आ रहे हैं, अर्बन बिल्डिंग बायलॉज, और उसके साथ दो और पॉलिसीज़ भी आ रही है. एक लैंड पूलिंग पॉलिसी आ रही है और TDR आ रहा है, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स. तो इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ JNK ने ऑलरेडी व्यूज़ मांगे हैं. उन्होंने मांगे हैं व्यूज़, लेकिन जो ड्राफ्ट रूल्स हैं, जो ड्राफ्ट बायलॉज हैं UBBL के, वो बिल्कुल ऐसे हैं कि मैनी ऑफ देम आर अनएक्सेप्टेबल. वो तो उसका उन बायलॉज का खासकर उनका लॉजिक हमें समझ में नहीं आता. और अक्सर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बिल्डिंग बायलॉज, इसमें बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जिनको चेंज करने की ज़रूरत है और जिनको एक्सक्लूड करने की ज़रूरत है, और नई चीज़ों को इंक्लूड करने की, विच मीन्स दे रिक्वायर अ कंप्लीट रिव्यू दीज ड्राफ्ट अर्बन बिल्डिंग बायलॉज. उसका अगर इस तरीके से ये इम्प्लीमेंट किए जाए, इनको इशू किया जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए, तो उससे हमारी तबाही हो जाएगी, हमारे अर्बन लैंडस्केप की. हमारे टाउन्स और सिटीज़ में कंजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और ये जो सेटबैक्स इन्होंने तकरीबन ज़ीरो कर दिया है, और FAR के चेंजेस जो बताए हैं, उनकी वजह से तो बहुत ज़्यादा जो हमारी अर्बन सिचुएशन है, अर्बन स्पेस है, ये ख़राब हो जाएगी. तो इसलिए हमने हमारी आज फैसला ये हुआ कि जो एक्सपर्ट्स ने कहा, जो उन्होंने इनपुट्स दिए, उसके बेसिस पर एक मेमोरेंडम बनेगा जो इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स और ग्रुप ऑफ कंसर्न्ड सिटीजन्स हम लोग इकट्ठे बनाएंगे,
और वो मेमोरेंडम हम सीएम साहब को भेजेंगे, सीएम साहब की ही लेवल पर हम भेजेंगे, ताकि गवर्नमेंट में उसको देखा जाए और उन व्यूज़ जो एक्सपर्ट्स ने दिए हैं उनको कंसिडर किया जाए, और ये जो यूबीपीएल है और बाकी लैंड पोलिंग और टीडीआर की पॉलिसीज़ है, और ख़ासकर यूबीपीएल द अर्बन बिल्डिंग बायलॉज को, इसको फिर से देखा जाए, उसको रिव्यू किया जाए, और ताकि गवर्नमेंट कोई ऐसा काम न करे, कोई ऐसा कानून न लाए, कोई ऐसे मेजर्स न ले जिससे खराबी हो जाएगी।